Click the bell icon to get latest videos from Ekeeda. Hello friends, now we are discussing more about sets. Now there are 7 types of sets. See, first one is empty sets, second one is singleton set, third one is finite and infinite sets, fourth one is proper subset, fifth type is universal set, type 6 that is equal sets, and the last one is complement of sets. So there are 7 types of sets. Now we are briefly discussing each set in detail. The first set is empty set. As the name suggests, empty. Empty means nothing in it. So example of empty set, let A be the set of die containing number 7 in its uppermost face. So A be the set of die. Now there is no possibility of getting 7 number on a die. So this is an example of empty set. This is described by empty curl bracket, or also this is denoted by phi. This symbol is known as phi, phi. Now the second type is known as singleton set. Okay, singleton means single element. There is only one element is present in that number. Example, okay, A be the only element of prime number which is even. कौन सा होता है? कौन सा होता है? That is 2. So 2 is the only even prime number. So there is only one possibility. So this is known as singleton set. One more example, moon is the natural satellite of earth. So there is only one moon. See, there are several we can say artificial satellites, but there is only one natural satellite of earth. So there is only one possibility. Then 29 February is the only day which is present in a leap year other than 365 days. So there is again example of singleton set. So first we studied empty set, now singleton set. Now the third type is finite set. As the name suggests, finite means countable. Okay, countable means, say we can say number of days in a week, say Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. Okay, see, there are only 7 days in a week, so we can count it. So therefore it is an example of finite set. जो count कर सकते हैं वो finite set, और जो count नहीं करेंगे वो क्या होता है? Infinite set. Example, natural numbers. Okay, natural number, even though natural number begin with 1, then second 2, then 3, then 4, followed till infinite numbers. So therefore we don't know the last number of natural numbers, and hence it is an example of infinite set. Yes, right. Now one more example, similarly we can say for whole numbers. Whole number begin with 0, then 1, 2, 3 and so on. Okay, so finite set means the countable set, infinite set is uncountable set. Now the next type is proper subset. Okay, what is the meaning of subset? Say first set containing 3 elements 1, 2 and 4, and set B say containing 1, 2, 3, 4 and 5. Here you can see every element of A, set A, that is 1, 2 and 4, which is present in set B. Getting it? Every element of set A is present in set B. So therefore we can say A is a proper subset of B. Now this is the symbol for subset. Now, but here we'll take one more example. Say A is equal to 1, 2, 5, 7 and B is equal to set, say only single element, that is 5. So here element of
set B, that is only 5, which is present in set A. So in this case B is a subset of A. So proper subset. So definition कैसे हो सकता है proper subset का? एटलीस्ट एक तो एलिमेंट दूसरे सेट में होना चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं प्रॉपर सबसेट. एटलीस्ट वन, उससे ज्यादा रहेगा तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं, जैसे 1 2 4 में सिंगल रहेगा तो भी चलता है. सो एटलीस्ट वन एलिमेंट. सो नोट एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ. एवरी सेट क्या होता है? इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ. Okay, so this is the best example of proper subset. We can use in somewhere in the solved example part. Now next is universal set. As the name suggests, universe. Universe means बहुत बड़ा. Probability में वो क्या होता है? Sample space. यहाँ पे होता है वो universal set. Universal set means there is all possibilities. All possibilities. सब possibilities होते हैं, इसको क्या बोलते हैं? Universal set. Example, natural numbers less than 1000. So I will write a is equal to 1 2 3 4 5 up to 1000. So there are all possibilities related with it. So ये हो गया मेरा यूनिवर्सल सेट. और ये सेट में से मेरे को चाहिए से इवन नंबर्स, तो आई विल राइट 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन टिल 1000. और सपोज मेरे को चाहिए प्राइम नंबर्स, लेट्स से सेट सी बी द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 1000. 2 3 5 7 11 13 17 एंड सो ऑन टिल 1000, जो लास्ट नंबर होगा वो. ओके, तो ये यूनिवर्सल सेट क्यों है? सेट ए को यूनिवर्सल सेट क्यों बोलेंगे? बिकॉज जो बी और सी के एलिमेंट्स है वो सब एलिमेंट्स कहां पे प्रेजेंट है? सेट ए में. ओके, याद आया कुछ? ये किसका एग्जांपल हो सकता है? यस राइट, सबसेट का भी एग्जांपल हो सकता है, क्योंकि जो 2 4 6 8 है ये सब एलिमेंट्स कहां पे प्रेजेंट है? सेट ए में. तो मतलब बी क्या हो जाएगा? इज अ सबसेट और प्रॉपर सबसेट ऑफ ए. ऑल्सो सी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए. बट सी, ये जो ए होता है ये जनरली ए से डिनोट नहीं करने का आपको. यूनिवर्सल सेट इज आइदर रिप्रेजेंटेड बाय यू और एक्स. You can describe it by any alphabet, sometimes U, sometimes X, but both the alphabets must be capital. ये याद रखो, दोनों कैपिटल होने ही चाहिए. कोई भी सेट कैपिटल से ही रिप्रेजेंट करते हैं, कभी भी स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट हो गया तो वो क्या होता है? एलिमेंट जो अंदर सेट के अंदर होता है वो. सो यूनिवर्सल सेट मीन्स इट इज द, वी कैन से द सैंपल स्पेस ऑफ ऑल द सेट्स. सो वी कैन derive one conclusion from it. क्या हो सकता है वो कंक्लूजन? यूनिवर्सल सेट इज अ पावर सेट. पावर सेट मतलब क्या होता है? जो सबसेट का ऑपोजिट, जैसे लेस देन का ऑपोजिट क्या होता है? ग्रेटर देन. वैसे ही सबसेट का ऑपोजिट होता है पावर सेट. तो मतलब मैंने बोला कि B इज अ सबसेट ऑफ A, तो उल्टा बोलूंगा तो कैसे होगा? इट विल बी A इज अ पावर सेट ऑफ B. तो यूनिवर्सल सेट इज अ पावर सेट ऑफ ऑल द सेट्स, रिमेनिंग सेट्स. गॉट इट? नाउ नेक्स्ट टाइप इज इक्वल सेट्स. इक्वल सेट्स मतलब क्या रे? दो टाइप्स के सेट्स हो सकते हैं, एक इक्वल सेट्स एंड सेकंड इज इक्विवेलेंट सेट. दोनों डिफरेंट है भाई, इक्विवेलेंट एंड इक्वल सेट. ओके, वी विल टेक एग्जांपल ऑफ इक्वल सेट आल्सो एंड इक्विवेलेंट सेट. ओके, इक्वल सेट, लेट A be the set of elements in the word angle. ओके, एंगल. तो आई विल राइट दिस एज, ओके, एंगल को मैं कैसे कर रहा हूं? ये कैपिटल में लिख रहा हूं, ANGLE. नाउ नेक्स्ट, बी द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स. बी द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन द वर्ड एंजल. Okay, now set B, angel. Angel again contain 5 elements, A, N, G, E, L. Again here I wrote all capital alphabets related with the word angel. Okay, you can see there are 5 elements present, A, N, G, L, E in set angle, and in set angel A, N, G, E, L. You can see A, N, G, E and L. All elements are
present here in both the sets. That means all elements are equal. तो ये set क्या होगा? Equal set. तो ये A is equal to B होगा. Okay, got it. Now we'll take example of इक्विवेलेंट सेट. ये इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए. इक्विवेलेंट सेट, इवन दो दिस इज नॉट द टाइप इन प्रॉपर्टीज और इन समवेयर पार्ट, बट दिस इज वेरी यूजफुल इन सम्स. ये इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? इक्विवेलेंट सेट मींस इफ सपोज फॉर एग्जांपल ए बी द सेट ऑफ द वर्ड एयर, तो एयर में कितने अल्फाबेट्स है? ए आई आर. एंड बी बी द सेट ऑफ एलिमेंट से गोवा, GOA. तो गोवा में भी कितने एलिमेंट्स है? 3. सो हियर आई कैन से नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट A is equal to 3. So I will write this n of A is equal to 3, and number of elements B present in set B, that is also 3. So n of B is equal to 3. So here 3 and 3 are equal, but these two sets are completely different. See here air and Goa are not related with each other. No other than A, no alphabet is common. So therefore we can say A and B are unequal set. ये equal नहीं है, but still number of A and number of B are equal. When elements containing them are equal, तो उसको क्या बोलते हैं? Equivalent set, which is known as equivalent set. Understood? What is the difference between equal set and equivalent set? Equal set equivalent हो सकता है क्या? Yes, हो सकता है. But equivalent set equal set हो सकता है क्या? Maybe or may not be. It's depend on the particular sets. Now, complement of set. Now, say this is rectangular bracket or rectangular box. This is nothing but universal set. Now, if I take set A, then the remaining portion in the universal set is known as complement of set. Complement of set is denoted by A dash. It is denoted by A dash. Example, let U be the universal set. U क्या universal set? So ranging from 1, 2, 3 up to 10. 1 से लेके 10 तक. Now set A containing elements which are less than 10 but they are even numbers. तो कौन से हो गए? 2, 4, 6, 8, 10. ओके, और मेरे को बोलेगा इसमें A कॉम्प्लीमेंट क्या है? A कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है अदर देन 2, 4, 6, 8, 10 और 1, 3, 5, 7 and 9. ये तो ऑड भी हो गए, ऑड नंबर्स, राइट? सो 2, 4, 6, 8, 10 इज एन एग्जांपल ऑफ सेट A which is even number. तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ऑड नंबर्स. तो हियर वी कैन से यूनिवर्सल सेट में से हम लोग कोई भी सेट को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है? उसका कॉम्प्लीमेंट. उसका कॉम्प्लीमेंट, that is A dash is equal to subtracting elements of universal set from elements from set A. Okay, now so there are, we already learned these 7 types. First was empty set, second was singleton set, third was finite and infinite set, fourth was union of sets. Now just we saw there are 7 types of sets. The first was empty set, second was singleton set, third was finite and infinite set, fourth कौन सा था? Proper subset, fifth one was universal set, sixth was equal set. ये equal set में हम लोग ने one more example देखा था, कौन सा? Equivalent set. And the seventh one is complements of set. Okay, so other than these 7 types, there are some rules. Yeah, we can say properties. The first property is known as union of sets. ये union मतलब क्या होता है? Union, combine, combination. Okay, so if set A say 1, 2, 3, 4 and set B containing say 2, 4, 6, 8, if I combine them, so it will be 1, 2, 3, 4, 6, 8. Don't repeat the number or element. Now the union of set is represented by A union B. This is the symbol for union of set. Now by using Venn diagram, set A and set B. Now
See this shaded portion is describing A union B in Venn diagram. If suppose two sets are different, that means they are complement, then A and B, this is the shaded region for union of sets. तो union of sets में necessary नहीं कि वो कुछ common होना ही चाहिए. तो union of sets, the sets, two sets may be intersecting and two sets may be mutually and mutually exclusive. Now the next type is intersection of sets. ये intersection means क्या होता है? जैसे for example, we'll take the same example. A is equal to 1, 2, 3, 4 and set B containing 2, 4, 6, 8. Okay, now the common elements between A and B is element 2 and element 4. So therefore 2, 4 are the common elements and it is denoted by A intersection B. This symbol, that is inverted U, is called intersection. So A intersection B is 2, 4. Now by using Venn diagram, this portion, this shaded portion representing A intersection B. Now for complements event A or complement sets A dash, see there is no common term. No common term, that means this is an example of empty sets. तो मतलब intersection may be exist or may not be exist, unlike union of sets. Union of sets तो exist होता ही है. Intersection of sets may be exist or may not be exist. Like in this first example there was intersection, in second example there was no intersection. तो कुछ common नहीं है भाई इसमें. Next, difference of sets. Okay, now this is the new type. ये आपने स्कूल लेवल में नहीं पढ़ा था डिफरेंस ऑफ सेट्स. मेजॉरिटी ऑफ द बोर्ड्स ये पार्ट आपको अभी नया है, जो ऑलरेडी आपने 10th स्टैंडर्ड या 9th स्टैंडर्ड में, लोअर स्टैंडर्ड में ये आपने नहीं किए. ओके, डिफरेंस ऑफ सेट्स. ये डिफरेंस मतलब एग्जैक्ट मीनिंग डिफरेंस का ये नहीं है. हियर द मीनिंग मे बी डिफरेंट. ओके, देखते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. से 1, 2, 3, 4, 5 बी द सेट. सेकंड set B, set 3, 5, 7, 8, 9. Now difference of sets. Okay, there are two possibility of difference of sets, A minus B और B minus A. Okay, अब ये दोनों कैसे रिप्रेजेंट करते हैं देखो. A minus B. First of all, difference of sets करने के लिए A minus B, whether it is A minus B, whether it is B minus A, first of all you have to know the common elements. यहाँ पे तो easily पता चल रहा है common element कौन सा है, 3, and one more example, that is common element is 5. So there are two common elements here, 3 and 5. Got it? Now अभी मैं क्या कर रहा हूँ देखो, set A में से I am subtracting elements from set A. कौन से एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करो जो कॉमन है. तो सेट ए में 1 2 3 4 5 है, उसमें से 3 5 सब्ट्रैक्ट किया तो रिमेनिंग क्या होगा, 1 2 4, राइट. तो A minus B is 1 2 4. Similarly for B minus A, कंसिडर सेट बी. जो फर्स्ट सेट होता है वो करते हैं हम लोग. तो सेट बी में कितने एलिमेंट्स है, 3 5 7 8 9. उसमें से A और B में कॉमन एलिमेंट्स कौन से, अगेन 3 5. सो अदर देन 3 5 देयर आर 3 एलिमेंट्स रिमेनिंग, दैट इज 7 8 9. तो ये 7 8 9 क्या होगा, सेट इसका B माइनस ए. सो डिफरेंस ऑफ सेट्स ये नया है बट इजी है. इसमें क्या करने का, आपको ओनली थिंग कॉमन निकालने के, और कॉमन निकालने के बाद जो फर्स्ट सेट में जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होते हैं वो लिखने के. अंडरस्टूड. सो दिस इज न्यू टाइप. नाउ properties of sets. See, there are several properties. First property is A union A is equal to A, or A intersection A is equal to A. ये दो प्रॉपर्टीज को क्या बोलते हैं, आइडेम्पोटेंट लॉ. आइडेम्पोटेंट लॉ. थर्ड प्रॉपर्टी इज A intersection null set is null set. क्योंकि A और null set में कुछ कॉमन होगा ही नहीं, तो अगेन क्या होगा, null set. एंड A union null set is A, क्योंकि A और यूनियन किसके साथ कर रहे हो आप, नल के सेट. तो नल सेट के साथ आप कंबाइन करोगे तो A तो होगा,
नल सेट का कुछ वैल्यू एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, बट ए तो है, तो यूनियन में क्या करते हैं, वी आर टेकिंग ऑल एलिमेंट्स, तो ये ए भी आएगा यहाँ पे। देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, और ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ये दो लॉ को क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव। So there are 6 properties of sets, just go through once again. Okay, now next part is some important results. These are very useful in sums, so be careful. The first important result is number of A union B is equal to number of A plus number of B minus number of A intersection B. This formula you already did in school level, just remember it. तो A यूनियन B इज इक्वल टू ये फॉर्मूला हो गया। सेकेंड, नंबर ऑफ A डैश इन यूनियन B डैश इज इक्वल टू नंबर ऑफ U माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B, एंड नंबर ऑफ A डैश, सिमिलरली द नेक्स्ट फॉर्मूला इज इंस्टेड ऑफ यूनियन जस्ट पुट इंटरसेक्शन। तो फॉर्मूला में क्या चेंजेस होगा, हियर इंस्टेड ऑफ इंटरसेक्शन देयर इज यूनियन। सी, these two formulas were derived by great mathematician De Morgan's. So therefore these two laws are also known as De Morgan's laws. Okay, तो ये De Morgan ने तो बहुत सारा derive किया, हम लोग को सेट में इतना ही है। Next, union of 3 sets. Now this is like first formula, but there were only 2 sets in the first formula. Now there are 3 elements or 3 sets. ओके, तो ये 3 सेट्स हो गए, तो फॉर्मूला थोड़ा बड़ा होगा, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ओह, इतना बड़ा फॉर्मूला आपको याद रखने का है, बट इट इज क्वाइट इजी। पहले क्या करने का है, जो ऑड नंबर्स होते हैं 1 2 3, जो सिंगल एलिमेंट से, ऑड नंबर से 1 तो उसको प्लस साइन, जो इवन नंबर से ए बी बी सी ए सी, वो इवन नंबर से उनको नेगेटिव साइन, और जो ऑड नंबर से 1 2 3 मतलब 3 एलिमेंट्स, तो ऑड नंबर है तो अगेन उसको प्लस साइन। दिस इज द क्वाइट सिंपल फॉर्मूला, बट रिमेंबर लेफ्ट साइड में क्या होगा, यूनियन, राइट साइड में सब जगह पे इंटरसेक्शन। इधर यूनियन मत डालो किधर, तो फॉर्मूला कुछ गड़बड़ हो जाएगा। गेटिंग इट? Now next formula is number of A intersection B complement। इसका फॉर्मूला क्या देखो, number of A minus number of A intersection B, and similarly the next formula will be number of A dash intersection B is equal to number of B minus number of A intersection B। ये याद रखने का ट्रिक कैसे पता है, जिसमें कॉम्प्लीमेंट नहीं होता है, जिसमें नहीं होता है, तो उसको आपको क्या करने का, एज इट इज। जिधर नेक्स्ट फॉर्मूले में देखो बी को नहीं है तो एज इट इज, देन सब्ट्रैक्शन, एंड ए इंटरसेक्शन बी तो होता ही है, क्योंकि आपने कॉम्प्लीमेंट की जगह पे ये किया तो ए इंटरसेक्शन बी आएगा, ए इंटरसेक्शन बी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू Ekeeda, स्टे ट्यून टू Ekeeda।